वेल हेलो, नमस्कार। हेलो पावर ट्रेन भाई। बिग फैन। सेम यार सर। तो गरीब सैंडविच में सबका स्वागत है। बहुत टाइम के बाद स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो ओके, वंशी कृष्णा और रोहित सुवर्णा मेंबर 28-26 मंथ्स। काफ़ी ओल्ड मेंबर्स है। और अगर आप मेंबर हो तो आपको वो शायद मिलता है ना हर महीने, टू सेंड अ मैसेज और समथिंग लाइक दैट। कुछ तो देखा था मैंने। एनीवेज, ओके, सब कुछ ठीक। तो आज आज का जो इसरो लॉन्च है वो थोड़ा अलग है नॉर्मल से। एक मिनट, आई थिंक वी हैव आवर गेस्ट हियर। आकाश भाई, कैन यू हियर मी? वेट, आई कांट हियर यू फॉर सम रीजन, 1 मिनट। स्पीकर्स। आकाश भाई, से समथिंग। Hi, hi, hi. Can you hear me? ओके, I यस। can't hear you on the Google call yet. ओके, बिकॉज आई कैन सी माई स्टफ मूविंग। मतलब मेरा माइक हिल रहा है। Yeah, ऑल्सो but यू आर nothing लाइव। is as we said. Oh, there you go. Here you ओके, are. ओके, Found you. ओके, ओके। आई हेट गूगल मैन। Hello. Thank you, sir. पर Hey, दैट्स man, गुड how's it ब्रो। going, GS? Yeah, no, no, it's fair. It's fair. Thank you so much for having me, man. Very excited for today. अरे ये कब से प्लानिंग में चल रहा है। हम आई थिंक 2 साल से ये स्ट्रीम प्लान हो रही है। इधर इसरो डिले हाँ, करता है या आप किसी में इन्वॉल्व होते हो। बट फाइनली हाँ. फाइनली इट हैपेंड। Yeah, I'm so glad it happened. या आई वाज एक्सपेक्टिंग यू मेंटली एट 5:30। आपने तो बोला था आप लेट हो गए ना, सरप्राइज। So I rushed and I made sure that I got on time. This is a general happy day, dude. For me, whenever I see a rocket go into the sky, मेरे को बहुत खुशी होता है कि यार कितना मस्त है हमारा दुनिया और कितना होप है हमारे रेस के लिए एंड ऑल ऑफ दैट. हाँ, हाँ। जब कोविड हुआ था और जब स्पेस एक्स ने अपने इंसानों को भेजा था फर्स्ट क्रूड मिशन, तभी सब उसी हाँ. की बात कर रहे थे कि ऑल्दो ये सब है, बट वी आर प्रोग्रेसिंग। I mean, it almost felt like a good this thing, right? In the sense कि like the अर्थ पे सब कुछ खराब जा रहा है, but अगले स्टेशन की तैयारी चालू है. हाँ, And it genuinely feels like that where कि ट्रेन चल रहा है और हम as we are going हम आगे ट्रैक बनाते जा रहे हैं. It's all very cut to cut. राइट। हाँ, Who knows how it will go. हाँ। Uh, आज यू आर प्रोबेबली एट द मोस्ट ऑकवर्ड एंड मोस्ट यूनिक पीएसएलवी लॉन्च। why? ओके, बिफोर दैट मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, बिटवीन 1 to 10, इफ यू हैव टू रेट Hmm. योर इसरो नॉलेज, तो 1 वुड बी लाइक नॉर्मल पब्लिक, उन्हें बस पता है रॉकेट ऊपर जाता है इसरो का। एंड 10 वुड बी हाँ. लाइक यू नो द डिफरेंट रॉकेट्स क्या है, क्या इंजन, वो सब कि क्या आपका कहाँ आता है। एंड I think you can count me at a strict 5 depending on subject matter. मेरे को पता है कि आज अपना रॉकेट जा रहा है. मेरे को पता है कि हम सिंगापुरी कंपनी के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं. हाँ, मेरे को ये भी पता है कि PSLV-5 अपना सबसे स्ट्रॉन्ग बूस्टर है. नहीं है. नहीं, इट्स लाइक नहीं है, नहीं है. इसके आगे और एक है. But yeah, I'm more generally I'm a science news fan. So space-based science is one small aspect of everything that I follow. कुछ मुझे पता होना चाहिए लाइक यहाँ ये क्या है, मतलब सो आई डोंट। Yeah, yeah. You can try me. If I don't know तो मैं मुंह पे बोल देगा कि नहीं नहीं पता है सर समझा दो. And that's always a good opportunity for everybody to learn about the subject. नहीं, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि लोगों को इसरो के बारे में पता है पर डीप नहीं पता। सो इसलिए अगर आप देखोगे, यू विल सी दिस इसरो वीडियोस विद स्पेस शटल एज देयर थंबनेल परफॉर्मिंग रियली वेल, बिकॉज Yeah, yeah. पीपल नो स्पेस शटल, बट जितने लोगों ने पीएसएलवी देखा होगा, लाइक हम तो उस बबल में रहते हैं इंटरनेट के, बट जनरल हाँ. पब्लिक वही है। Yeah, मतलब डिबेट होता रहता है कि इंडिया में जब बच्चा बड़ा होता है तो नासा के बारे में पहले जानता है, और yeah, उसके yeah. बाद Absolutely. अपने अपने इसरो के बारे में। तो No, but 1 मिनट। I think that is also going to change. I mean, people like you are only driving that change, right? Because like तुम हो तो लोगों को पता चल रहा है नया नया चीज. मैं तो कितना सीखता हूँ just from your channel.
It's my that's why I'm a continuing patron for so many months. हाँ, आप तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स हो, आई थिंक Yeah, 2 as साल soon होंगे as you अगस्त में। started it. हाँ, हाँ क्या? अरे हाँ नहीं हाँ आई रिमेम्बर अरे हाँ, 2020 में तो मैंने अरे आप आए थे फॉर दैट इसरो बर्थडे स्ट्रीम इन 2 years या ago, या और नो उसके डिड बाद आई कोई, आई डोंट नो हाँ, इसरो बर्थडे स्ट्रीम August 15, इंडिपेंडेंस डे के दिन ही उनका स्ट्रीम बर्थडे है। I think we met during the lockdown only, and that's when I became a regular member because I thought कि यार ये एक चैनल है जिसको पैसे की जरूरत है और मिलना चाहिए. सो वो स्ट्रीम के बाद कोई स्ट्रीम नहीं हुआ बाद में। I also remember केएसपी, watching that the Chandrayaan stream that you did, if you remember. You did a live stream and where you tried to land that lander from Chandrayaan. हाँ Remember the वही one you वही made in the उसी game? उसी में आए थे, हाँ, केएसपी गेम कर्ली हाँ, फ्रिज प्रोग्राम। yeah. It उसके was damn बाद वो funny हुआ to ही me. नहीं, तो वो करना है वैसा स्ट्रीम वापस। तो For लेट्स सी। sure. या So can you tell us more about today's launch? More about the PSLV. How is it different from the GSLV? यस These are all questions या in my mind. तो बेसिक बता देता हूँ करंट ऑपरेशनल रॉकेट्स के इसरो के। Hmm. एक है पीएसएलवी और दूसरा है Hmm. तीन है टोटल ऑपरेशनल। एक है पीएसएलवी और एक है जीएसएलवी मार्क टू, समटाइम्स रिफर टू एज जीएसएलवी मार्क वन, वो खुद में एक कंट्रोवर्सी है व्हाट इट इज सपोज टू बी कॉल्ड, सेम रॉकेट बट। Hmm. और एक है अपना सबसे पावरफुल विच इज जीएसएलवी मार्क थ्री। Okay. सो आज लॉन्च हो रहा है वो पीएसएलवी है। इट्स पीएसएलवी के मल्टीपल वर्जन्स है, इट्स द सेम Right. पीएसएलवी बट हाउ मेनी बूस्टर्स यू पुट ऑन इट्स बेस। तो Right. आज लॉन्च हो रहा है समथिंग कॉल्ड सीए और कोर अलोन, मतलब कोई भी बूस्टर नहीं है, बस कोर ही है उसका। Okay. वैसे ही देर आर 3 मोर, दैट इज डीएल, क्यूएल एंड एक्सएल। डीएल मतलब Okay. डुअल, मतलब 2 साइड बूस्टर्स होंगे, क्यूएल Yeah. मतलब क्वाड 4 होंगे, और एक्सएल Yeah. में 6 साइड बूस्टर्स होते हैं। Ah. तो Okay. डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। This becomes a ring. Hmm. हाँ, तो आज कोर अलोन है और सिंगापुर वालों के बहुत नखरे हैं। दे वांट इट टू Oh. बी सिक्रेटिव एंड व्हाट नॉट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द स्पाई सैटेलाइट्स, मल्टीपल। Oh. और वो Okay. लोग ने मतलब बहुत नखरे किए, लाइक आई हर्ड थिंग्स बट आई कांट से देम पब्लिकली, Oh. बट What are these things you are hearing, dude? आई कांट रिस्क। बट हाँ, लाइक वी डिडंट इवन गेट अ प्रेस किट इस मिशन के Right. लिए। Yeah. 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 But I'm यूजुअली glad that at least they announced it. I mean, you know, having a the minute you have a 24-hour, 25-hour. Why is it a 25-hour countdown? Like, this was a very दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मे बी समवन फ्रॉम माई डिस्कॉर्ड विल नो, यहाँ सब एक्सपर्ट्स बैठे हैं। hmm. व्हाई इज इट लाइक 26 आवर और 20 वट एवर इट इज। हाँ, चैट जिंदाबाद यार, ये मामलों में चैट को सब पता होता हाँ, माई अंडरस्टैंडिंग इज वो सब फ्यूलिंग प्रोसीजर्स वगैरह बहुत पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि पीएसएलवी के है. केस में भी वगैरह इट यूजेस अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट, मतलब लास्ट मिनट भरना नहीं पड़ता है, Right. यू कैन Yeah. फिल इट एंड कीप एंड देन मॉनिटर। Hmm. बट आई एम श्योर समवन हैज अ इवन बेटर आंसर। Hmm. Yeah, I'm sure somebody does. Guys, give your answers. We would like to know more. Well, 25 hours is just interesting. But 25 hours is like, you know, you can't even set an Instagram reminder because even that I think is 24 hours. So, I don't know how it's working. Wow. Yes, this is a very interesting thing as well, though. Like, I don't know if you're reading the comments as well, but somebody's saying कि half a year is done, but it's the second launch of ISRO, and yesterday was the 28th launch of SpaceX. हाँ, Do you feel like it's partially because, I mean, obviously partially it's also that SpaceX is testing like crazy, and they're हाँ, very happy to just lose a rocket when they're testing it, as we saw with the हाँ, Starship वो also. तो स्टारशिप के मामले में, बट इवन दिया फाल्कन प्रॉब्लम हाँ. थिंग इज वो खुद के भी एक बड़े कस्टमर है ना स्टारलिंक के लिए। सो Right, right, मेजॉरिटी ऑफ लॉन्चेस आर ऑलवेज स्टारलिंक। प्लस ऑल्सो right. इसरो का प्रॉब्लम ये है कि आई वांट टू एड्रेस दिस इन डिटेल समडे, इट इज़ नॉट इजी टू स्केल रॉकेट लॉन्चेस लाइक इट इज़ टू स्केल एनीथिंग एल्स, बिकॉज पीएसएलवी Fair. के केस में देखो देयर विल बी लाइक 3000 प्लस इंडस्ट्रीज। तो सपोज आपको एवरी ईयर 4 लॉन्च से 8 में जाना है, ये सब इंडस्ट्रीज को अपना डबल करना पड़ेगा प्रोडक्शन। Fair. Fair. और Yeah. डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, इफ इट्स लाइक अ मोटर केस एंड ऑल, वो इजी नहीं होगा स्केल अप करने। और इन्वेस्ट कौन Right. करेगा उनके स्केलिंग अप को, किसी को तो पैसा देना होगा उन्हें एक्स्ट्रा। Yeah. तो इसरो ने काफ़ी इंडस्ट्रीज को हैंड होल्ड किया है इतने साल, पैसे वगैरह दे के उन्हें
सेटअप वगैरह करने, बट आई मीन वही गरीबी में अटक गेला, कितना ही No, कर. but it invariably will boil down to it'll, I mean, I to see it as a function of demand and also a function of SpaceX having everything in house. हाँ Almost all of it is in. I don't think they have a lot of stuff that's outsourced to other companies and industries as such. हाँ, मतलब I रेशियो mean, that बहुत छोटा also, है वर्टिकली. हाँ, क्या बोलते हैं उसे, वर्टिकल. vertical integration. हाँ, वर्टिकल इंटीग्रेशन. बट या Yeah, काफ़ी yeah. सारे है जो प्रूवन स्टफ, जैसे ड्रैगन पे भी पैराशूट वगैरह बाहर से आता है. Hmm. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इसरो के मामले में क्या है, सी द प्रॉब्लम विथ इसरो, इट्स अ गवर्नमेंट थिंग. Hmm. सेम एज नासा. अगर आप नासा के सेंटर्स देखो, पूरे अमेरिका में फैले हैं. वाई? बिकॉज दे Yeah, वांट टू yeah, कीप पॉलिटिशियंस हैप्पी, ताकि फंडिंग yeah, आते रहे. सो उनके उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक एक सेंटर डाल दिया, जॉब्स yeah, आ गए, फंडिंग भी आ गई. yeah, तो वो डायरेक्ट, इट्स नॉट दैट बिग प्रॉब्लम फॉर इसरो, बट वो है उस काइंड ऑफ है. जब तक वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं बढ़ेगा. yeah. हाँ वो तो अभी सवाल ही नहीं है बट आई मीन अगेन दैट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई सी विद नासा वेयर नासा हैज मतलब हाथ ऊपर कर ही दिया इवेंचुअली वो लोग ने और बोला देखो ये अमेरिका है इधर हम लोग सब कुछ आउटसोर्स करते हैं या तो फिर हम हम्म. लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ही मानते और वो लोग ने वो किया है which I think in itself has led to some very interesting developments because just I mean obviously there is that initial cost of giving Amazon and हम्म. SpaceX that or Blue क्या है उसका ब्लू ओरिजिन. Horizon ब्लू Blue ओरिजिन. Horizon को पैसा दे दिया डेवलपमेंट के लिए हम्म. but the benefits that they will reap from this are going to be very long standing because I feel like it's just kind of jump started the entire process of wanting to go back into space. हम्म. I mean, don't you think it's fascinating कि लॉकडाउन में पेंटागन ने बता दिया कि हमें यूएफओ मिले and it was not the biggest news story for the next 6 months. Like we found out we have aliens and we were not impressed. I don't know. I think it's आई थिंक उनका फ़ायदा ये है कि दे कैन आउटसोर्स टू कंपटीशन, तो अच्छे रेट्स मिलते हैं उन्हें. बट इंडिया में तो इंडस्ट्री अभी आ रही है स्लोली. इट विल टेक मेनी मोर ईयर्स फॉर इट टू स्ट्रीमलाइन. बट अच्छा एक्टिविटी दिख रहा है अभी. तो होपफुली विल yeah, बी समडे absolutely. लाइक दैट वेयर PSLV एंड ऑल इज इररिलेवेंट बिकॉज वी हैव बेटर प्राइवेट Yeah, रॉकेट्स. बट बहुत टाइम है उसे. इट्स नॉट सो क्लोज. इसरो हैज़ I टू think ग्रैब द we've बटन. yeah, and I think it's also ISRO is the only person who can. I mean, there's such a good track record also, right? Of just getting things done हाँ, at a irrespective of budget, irrespective of who is in power. राइट. Chalo, at least hey, we have the stream has started. Yes, यस. ISRO has started beaming us the footage. हाँ, लेट उससे पहले एक कूल चीज़ डिस्कस कर लेते Hmm. हैं. हाँ, उसी के साथ है वो. Hmm. So how the payload looks, there is one interesting thing that is not being discussed enough. ISRO is hiding this. Hmm. They have this is by the way OSIN ka, he ISRO subreddit ka mod hai wo, great work. Hmm. So this is the stack. We don't know how everything else looks. This is what OSIN thinks it will look. Hmm. यहाँ पे उनका वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यहाँ पे SAR सैटेलाइट, Right. और एक वो स्कूप वन समवेयर आउटसाइड. बट इफ यू सी हियर देयर इज अ फ्लैग. आई शो यू. ये देखो. Right. I did not notice this. So this is probably something related to Independence Day thing, but we don't have detail. Right. There is a camera probably on top with a flag and some pledge or some sort of writing. But ISRO is like kept quiet. ये बस वो एक इनाडू डॉट कोई तो है local regional media. Yeah. They had broken this, but we don't know what it is. Interesting. Very interesting. I find it very interesting that GS, your voice is a little fluctuating. Is it? Is it because Yeah. of my mic? Could be the mic. हाँ. तो Yeah. तो I But yeah. don't know what it is, but it is something to look forward on in August. चलो तो interesting. हाँ, और वही 1.5 महीना दूर. बाकी सब सीक्रेट, नो वन नोज क्या चल रहा है इसमें. बट Hmm. या, और ऑल्सो दिस टाइम आई हैव अ न्यू लेआउट. सो ये SpaceX से इंस्पायर्ड है. नीचे देयर लाइक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसके ऊपर नेक्स्ट इवेंट दिखेगा. Yeah. बिकॉज उनका देख, मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं कॉपी करना, बट उनका इतना कॉम्पैक्ट है. यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इतने से स्पेस में.
yeah, तो absolutely. पहले मैं वो सब एक साथ डालता था, बहुत क्लटर्ड लगता था. तो अभी Hmm. ये भी प्रेस किट में यूजुअली हमें मिलता है कि किस टाइम पे क्या होगा, बट इस Right. केस में नहीं मिला. तो स्पेशल थैंक्स दो लोगों को. एक है अपना टाइटेनियम भाई, हु सजेस्टेड कि पहले भी सिंगापुर का कर चुका है लॉन्च इसरो, तो Hmm. उनके टाइमिंग्स यूज़ करो. एंड देन एक और बंदा है कॉल्ड द नाइव समोसा इन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, विच इज़ मेंबर्स ओनली बाय द वे. He Hmm. got the timings. I don't know from where he got. I think he has I think he knows some people at Shar. तो उसने सब टाइमिंग्स Right. डिटेल में लाए. Hmm. एंड वी हैव दिस, बट ये वेलोसिटी और ऑल्टीट्यूड डेटा माइट बी लिटल ऑफ, तो उस Hmm. पर ज़्यादा मतलब एंकर मत करो, अदर एवरीथिंग इज गुड. I'm just surprised, man. I just like that it is so sleek. Everything looks very nice and very presentable. I think a lot of, at least as somebody who is not, never had a formal scientific education in my life except for maybe school, I feel like a lot of it boils down to just the visual display of what you're seeing. Like I would know a lot more about science, I feel, and a lot of people would know a lot more if it was just presented better. You know what I या mean? राइट, And अग्री. these tiny details make a huge difference. I had the privilege of going to some very good museums all over the world, and it's just that basic this thing of, oh, here is information. What is a great way to represent and to give you this information? हाँ, आई थिंक मैंने अब तक एक अच्छा म्यूजियम विजिट नहीं किया जो जो मतलब खतरनाक रिप्रेजेंटेशन करे. इट्स मतलब एक बड़ा टेक्स्ट का ब्लॉग डाल देते हैं वहाँ पे, और Yeah, yeah. I mean, uh, personally, तो I feel कि इंडिया में मैं तो ऑलमोस्ट सारे म्यूजियम देख के आया हूँ, मेजर सिटीज वाले जो भी है, हम्म. टाइम निकाल निकाल के, और कुछ है ही नहीं. मतलब लाइक द गैप इज जस्ट टू मैसिव. But I think it's also how seriously we take our own science education compared to other countries. You know, नहीं, मैंने एक अपने वीडियो इधर. बनाया था रिगार्डिंग दैट, हम्म. रिगार्डिंग दोस रॉक स्कल्पचर्स इन गोवा. हम्म. हम्म. आई रिमेंबर पढ़ते पढ़ते दे मेंशन्ड ऑल दोस, सम ऑफ दोस थिंग्स फाउंड लाइक ओल्ड एक्सेस एंड ऑल ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल आर देयर इन गोवा म्यूजियम. अब गोवा म्यूजियम विजिट कर चुका हूँ, बट कुछ याद ही नहीं हाँ, है बिकॉज कॉन्टेक्स्ट ढंग से नहीं है वहाँ पे दिया हुआ. इट्स जस्ट प्लेस्ड. क्योंकि उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स है. अभी मैं 2 साल, 1 1.5 साल पहले गोवा म्यूजियम गया था. आई थिंक यार, जस्ट आई थिंक प्री पैंडेमिक और जस्ट पोस्ट पैंडेमिक, आई कांट रिमेंबर, बट सिमिलर. लाइक इट्स जस्ट रख दिया, वो क्या है हाँ वो बोल दिया, और हाँ. फिर बात खत्म. Similar with the Forest Research Institute का museum in Dehradun that I had visited. By the way, I almost got COVID in that, so I got very lucky because I went there and I saw everything, and then next day it was shut down for COVID. This thing for Oh. many COVID cases. But that same thing, like there is an entire room full of basically tree diseases का एक ही है, और उसमें Oh. कुछ है ही नहीं. उसमें बस अलग अलग डिजीज को उसके अंदर रख के बस बोल दिया कि ये डिजीज है. अरे पर वो क्या है, क्यों है, तब, एग्जैक्टली, बिकॉज यू कॉन्टेक्स्ट. कांट. या. उसका ब्यूटी उसके कॉन्टेक्स्ट में है. हाँ. कहाँ वो कॉन्टेक्स्ट दो हमें. I mean, it's like the story of how they found out the background radiation of the universe, right? That massive dish that they had, and they thought everything, कुछ भी हो सकता है. कबूतर का आवाज है कि कबूतर पॉटी करके गया. पूरा साफ करने के बाद समझ में आया, नहीं, ये तो बिग बैंग का प्रूफ मिल गया है तुमको. वैसे ही मैं गुजरात वो साइंस सिटी में गया था. दे हैव दिस ह्यूज ग्लोब, और उस ग्लोब में उसके टॉप फ्लोर पे वो जियोलॉजी की चीज़ें है, वियर्ड मिनरल्स, रॉक्स. अब है वो अच्छे लग रहे, बट क्या है वो, लाइक व्हाई आर दे लाइक दैट, Yeah. नहीं था उस वहाँ पे. I think, but hey, at least you are there. You are the savior, bro. मेरे हिसाब से तू पढ़ा रहा है तब तक सही है. बस तू और बना. थैंक यू. Oh wow. I like these camera angles also that they have chosen for the entire process. कि मतलब हम ऐसी, I don't know if you are hearing the audio. I don't know if the audio is setting context to this, but looking at this, I'm just like, okay, लोग आए हैं, कुछ होने वाला है. वाह, very good looking rocket though, I must say. या these are new camera angles. ये कैमरा एंगल्स हमने आई थिंक फर्स्ट टाइम, राइट. Hmm. ये I think generally ना, ये जब if like the rest of the Indian government has been very good at this lately. They are very good at highlighting their achievements. I wish that some of that PR funding could go to the ISRO, and they could also highlight their achievements better. You know. Yeah, it's opposite at ISRO. They took extra effort to hide it. Yeah.
उनका मिलता है, पता नहीं क्यों. दिस इज लेगेसी Yeah. मेंटेलिटी जो कैरी ऑन हो गई है. एंड Hmm. मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर टेकिंग दिस डिसीजंस, वो ज़माने से है ना, मतलब न्यूज़पेपर में चला गया हो गया, दैट इज़ योर एंड गोल. उन्हें ये उनकी गलती नहीं है, उन्हें समझता नहीं है ये कि सोशल मीडिया क्या है, कैसा होता है. लाइक वो विजन नहीं है. कोई समझाएगा तो हो जाएगा मे बी, बट Sorry, yes, I lost you there for a second. हाँ I'm back now. हाँ. ऑन द फुटेज थिंग एक और चीज़ ऑडियंस को याद दिलाना चाहूँगा. पीपल लव टू अब्यूज दूरदर्शन ऑन दिस. मुझे खुद को पसंद है क्योंकि मेरे को काफ़ी कॉपीराइट क्लेम्स आए. बट इन दिस केस ये हाँ. इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रोडक्शन इसरो करता है. दूरदर्शन इज विनर Hmm. ब्रॉडकास्टर, वो इसरो उन्हें देता है माल, दे ब्रॉडकास्ट. Yeah. तो अगर किसी को बोलना है कुछ, देन इट इज इसरो यार, नॉट दूरदर्शन. Yeah. And I mean, yeah, and if Doordarshan was separately covering it, I think they would do a good job. Because lately, if you've been watching Doordarshan, they have been really covering the hell out of stuff that's going on. अच्छा. Okay, what are we seeing on screen, James? What is this? Is this the This is booster? yeah, this is the nozzle end segment of PSLV score booster. Right. तो और ये पेट्रोल इसमें नहीं डालेला है, पेट्रोल पहले से अंदर है. it is a solid booster. So it's like Right. casting a cake. तो इसमें ऑलरेडी वो कास्टेड है जो सॉलिड फ्यूल है. इन दिस केस इट इज हम्म. हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन. एंड दिस इज द नेक्स्ट सेगमेंट. आई थिंक दिस इज मिडल सेगमेंट. और इसके ऊपर एक और आएगा हेड एंड सेगमेंट, दिस विल गो ऑन टॉप. आई थिंक वो टू आर Okay. I think we've lost you. We've lost you. The audience can't hear you. sound gone apparently. So my mic has moved. Okay, am I back? हाँ Yes, you're back. Yes, you हाँ were saying if you could say it again. हाँ. तो मैं बोल रहा था वो पहले वाला था, वो नोजल एंड सेगमेंट था. ये बीच के सेगमेंट, वो देखो आप, सॉलिड फ्यूल दिख रहा है वहाँ पे. और हम्म. ये है व्हाइट कलर का. हाँ, इस PSLV के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बूस्टर का. द नोजल हैज़ होल्स. करेक्ट. द रीज़न हियर इज, फर्स्ट स्टेज जब उड़ रहा है रॉकेट, इफ इट वांट्स टू पिच, लाइक हिलना है उसे, तो इन दिस केस व्हाट दे डू इज दे पंप समथिंग कॉल्ड, दिस इज अ फ्लूइड, आई डोंट रिमेंबर इट्स स्ट्रॉन्शन समथिंग, बट इट्स अ ऑक्सीडाइजर. तो जिस डायरेक्शन में मूव करना है उन्हें, उसके अपोजिट नोजल के थ्रू वो पंप करेंगे. एंड देन द नोजल, द बूस्टर विल फील अ फोर्स इन वन साइड, बिकॉज सडनली Right. आपका जो फ्लेम आ रहा है इट्स नॉट यूनिफॉर्म, एक साइड से ज़्यादा आ रहा है. तो दे डू दिस बाय इंजेक्टिंग, आई डोंट नो व्हाट स्ट्रॉन्शम व्हाट, आई थिंक कोई मुझे याद दिला देगा इन डिस्कॉर्ड और चैट. सो दिस इज कॉल्ड SITVC, मतलब सेकेंडरी इंजेक्टेड थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल. नाउ TVC इज नॉर्मल, जेट इंजिन पे भी देखा होगा जहाँ उनका इंजिन हिलते हैं, दे वेक्टर थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल. Correct. इन दिस केस इट इज Correct. secondary, since the nozzle is not moving. You are pumping Okay. oxidizer in whichever way you want, and then moving Yeah. the entire rocket. So yeah, this is fascinating, right? Because but मेरे लिए तो ये out of syllabus ही हो गया चीज. Because in my brain the idea is कि if the force is going in one direction, the हाँ. object has to move in the opposite direction. तो वो तो Yes. समझ गया, third law of motion. Yes, हाँ. याद है. But by, so can you explain this better? Because so you're saying कि essentially by how is it able Yeah, to so- give that sideways? So there are normally rockets में क्या होता है, the whole nozzle can move. Hmm. So Yeah, when you yeah. move the nozzle, you move the thrust or the vector force जो जिस Yeah, yeah. इस केस में nozzle fixed है, but the nozzle has holes, जिसके many holes in the circumference. हाँ, तो suppose उसे right move करना है, then it will pump on the left, तो ये तीन बंद कर देगा. and then Okay. the flame is not uniform. तो आपको Yeah. थोड़ा बहुत left force या right force मिलेगा. हाँ. And this is how And the rocket so can move. yeah, and it doesn't have to turn too sharp anyway, right? ऐसा तो नहीं है कि वो जा रहा है और अचानक आगे रास्ता बंद है और उसको लेफ्ट लेना पड़ रहा है. I mean, है but significant है. Since rocket का काम ऊपर जाना नहीं है, right? It has to be at one point Yeah. parallel to the earth. Yeah. तो वो जो मैंने लिक्विड बोला जो पंप होता है, वो साइड में छोटे छोटे ये दिख रहा है आपको ट्यूब्स नीचे PSLV के, Hmm. उसमें स्टोर्ड है वो. फ्रॉम दैट इट इज पम्प्ड, सो इट्स नॉट इनसाइड द रॉकेट, इट इज आउटसाइड. Right. तो ये काफी Fascinating. कूल है PSLV का. Hmm. ये
तो SpaceX यूज करता था ना. नहीं, SpaceX has nozzles that या can be नॉजल्स मूव, moved around. नॉजल्स गिम्बल. Yeah, इसका भी GSLV का भी yeah, मार्क 3 का नॉजल हिलते हैं. yeah. बट इट्स It's fascinating to me how this is, how this works when you're scaling up as well. Because when it comes to the SpaceX rockets, वो लोग का वही है कि booster लगाते जाओ, booster लगाते जाओ, booster लगाए, and all of them are more or less independently kind of moving around when it comes to coming back down. Uh, Here, though, it's a very different approach because the PSLV is not meant to come back down. Neither is the करेक्ट. GSLV. आई मीन सॉलिड है तो अगर आप रिकवर भी करोगे इट विल बी लाइक अ मेटल शेल. क्या ही करोगे उसका. Exactly. इट विल बी मोर Exactly. एक्सपेंसिव टू रिकवर देन सिंपली बिल्ड अ न्यू वन. Yeah. तो आपको पूरा Yeah. फ्लीट मेंटेन करना है, एंड ऑल इज एक्सपेंसिव नेवी फ्लीट. तो Yeah. इसरो के आई थिंक प्लान्स थे एक पॉइंट पे जहाँ पे वो GSLV के जो साइड के बड़े बूस्टर है उस पर पैराशूट लगा के पानी में उतारो. बट देन वो उतना लॉन्च ही नहीं होता है. तो Yeah. Like GSLV, I think the last time they used the GSLV was when they did that record-breaking satellite launch. उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं था नहीं मेरे नहीं, हिसाब रिकॉर्ड से. ब्रेकिंग में PSLV ही था. उसमें भी PSLV था. हाँ. Oh, लाइक तो हम GSLV का क्या कर रहे हैं? GSLV is for huge missions like Chandrayaan and all. वो बहुत like GSLV Mark 3 can put 4.5 tons approx into geo transfer orbit. तो या तो 10 tons in low Earth orbit. तो फ्यूचर में स्पेस स्टेशन, गगनयान, तभी GSLV लगेगा. तो आई थिंक इस बार एक कमर्शियल वो एयरटेल का है ना, वन वेब कॉन्स्टेलेशन, स्टारलिंक का कंपटीशन. तो उसके लिए GSLV एक लॉन्च होने वाला है शायद मार्क 3 इस साल. तो It's very fascinating to me कि इतने सारे अलग अलग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन रहेंगे. I mean, obviously देखो, अभी हमें भी पता, तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है, ये जब तक फ्री मार्केट है तब तक और प्लेयर्स आने ही वाले. हाँ, Amazon प्लान कर रहा है काइपर कॉन्स्टेलेशन उनका. Yeah, and I'm very sure China has half made a constellation and we don't even know. उनका प्लान है. मैं सही में बता रहा हूँ. एक दिन है ना, कोई ऐसा वो मिरर लेके ना मून के पीछे जाके जरा लाइट मारो डार्क साइड पे. चाइनीज लोग उधर फार्म बीम चला रहे, उधर वो लोग ट्रैक्टर पे घूम रहे. मैं बता रहा, चाइनीज लोग बहुत शातिर है ये मामले में. We have 1,000+ viewers right now. Hey, that is superb. I'm so glad. Thank you all for joining, guys. It's always nice to see that people care about science. Long March 5 failed. अरे वो लंबा मार्च था ना, थक गया था यार वो. उनका अच्छा है, चाइना का फेलियर हुआ तो भी पब्लिकली रिस्पॉन्सिबल है नहीं ना उनकी एजेंसी. हाँ, तो और पैसा मिलेगा, एक और रॉकेट बिल्ड करो. I don't know if you read the thing about there was a crash on the moon. The space debris watchers found the crash on the moon, and they started asking around कि ये किसका है? Did you read about that? And they were like, SpaceX, क्या ये तुम्हारा है? And they were like, नहीं, ये हमारा नहीं है. They were like, China, क्या ये तुम्हारा है? China like, नहीं, हमारा भी नहीं है. I think उसका एंड क्या था? एंड क्या हुआ पता नहीं. हाँ, उसका अभी पता नहीं है किसका है. Because I think the body that's observing all of these objects is also an independent body. I don't think it's a government affiliated body. तो कोई उसको खास seriously लेगा नहीं. हाँ, अभी बात तो यही चल रहा है कि ये चाइना का रॉकेट है. But अभी who knows? Correct. I mean, बोल रहा है शायद मेरा है. I mean, एक यहाँ पे नोट भी करना होगा कि हम कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे. हम इसरो भी कौन सा हाइपर रिस्पॉन्सिबल एजेंसी नहीं है. बट इस केस में दे आर ट्राइंग. अगर आप PSLV का इस केस में देखो, जो 4th स्टेज है, यूजुअली ऑर्बिट में रह जाता है. आफ्टर फ्यू इयर्स इट माइट कम बैक. बट सो व्हाट दे हैव डन इज, इस पे सोलर पैनल्स और स्टेबलाइजेशन इक्विपमेंट डाला है, एंड नाउ दे आर होस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट फॉर फ्री. सो स्टूडेंट्स एंड ऑल कैन मतलब डाल सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह उसके ऊपर. और अगर छोटे इंडियन स्टार्टअप्स है जिन्हें अपना वेरीफाई करना है चलता है कि नहीं चीज़ें स्पेस में, तो वो भी कर सकते हैं. इस केस में आज इस लॉन्च में 2 स्टार्टअप्स है हु हैव देयर स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट. वन इज ध्रुवा स्पेस, जो अपना डिप्लॉयर टेस्ट कर रहे हैं. मतलब जब आप नैनो सैटेलाइट किसी को अटैच करते हो तो जो डिप्लॉयर है विच सेपरेट्स द सैटेलाइट्स, तो वो खुद का डिप्लॉयर टेस्ट करने वाले इसके ऊपर. और एक और है दिगांतरा करके, दे आर टेस्टिंग अ न्यू वे टू मेजर सम एटमॉस्फेरिक थिंग. मैं डिटेल में नहीं गया उसमें. सो उसका सेंसर उसके ऊपर, और 2-3 एक्सपेरिमेंट्स है स्टूडेंट्स के वगैरह. तो दैट इज द वे दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस
like at least be responsible, because no more it's space debris, right? वो use होने वाला है अभी. हाँ, मतलब I तो genuinely feel like the space debris problem is one that might creep up on us. You know, I mean, humans have not been very good at managing waste over the last 100 years or अरे so. creep up क्या, उस गिरा ना recently चाइना का वो महाराष्ट्र में. They killed the Exactly. animal and all. अरे कोई इंसान होता तो फिर मतलब so And close. it's damn. I remember I was very close to Tadoba during that time. I had just gone for some shows to Chandrapur. And I was so close to going to the site, but I could not make it to the site. But it was very interesting to hear all the locals' ka stories, because the minute it landed, there were 700 theories ki ye kya hai, including alien hai, including Bhagwan hai, including army hai, Pakistan ne attack kiya hai, kya hai samajh nahi aa raha hai log ko. That is interesting. Quick shout out to Aakash. Thank you for the super chat, man. He's saying keep it up, bro. Jai Hind. Thank you. Oh, Canadian dollars always very good. एक मिनट में जल्दी रन अप करता हूँ इनका. तो वंशी कंप्लीटेड 26 मंथ्स मेंबरशिप. रोहित सुवर्णा, ये तो बहुत ओल्ड है, 25 मंथ्स. एस्ट्रोबॉट 22 मंथ्स. अंशुमन 25 मंथ्स. सोहम 9 मंथ्स. भार्गव शर्मा 3 मंथ्स. अमय वाले नहीं, इज नॉट न्यू बट इट्स शोइंग न्यू, इज ओल्ड. टेक स्टूडियो नोवा गेमिंग 6 मंथ्स. अभिनव संतोष न्यू. प्रवीण 8 मंथ्स. एस्ट्रोनील भाई लेजेंडरी पर्सन, यू शुड फॉलो हिम ऑन ट्विटर. ये वो बंदा एकदम मतलब डीप 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 टेक्निकल स्टफ जानता है, बहुत नॉलेजेबल. 25 मंथ्स. फ्लाइंग तारोत 8 मंथ्स. और आकाशदीप सिंह, थैंक यू भाई. हाँ, तो लाइक दिस ये इंटरेस्टिंग है ये लोकल्स. आई मीन लोकल ने रॉकेट साइंस पढ़ा होगा ना पूरा कि ऐसे भी कुछ होता है कि रॉकेट छोड़ के आता है चीज़ें और कुछ चीज़ें वापस गिर जाती है. आप I think my biggest fear is कि eventually there will be so much debris that we won't be able to leave the planet only, you know. I mean possible. साइंस का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा उस केस में. हाँ, मतलब मेरे देख वर्स्ट केस सिनेरियो तो कुछ नहीं, ऐसा वो नेट लेके जाने का. Although you need a pretty strong net, some of those objects are flying very fast. that is what I'd ये स्पेस जंक का जो ये बना के रखा है ना, that आपने वो इमेजेस देखे होंगे स्पेस जंक के, where they show lot of dots on earth, but problem is that dots का scale नहीं दिखता है. Like most of the satellites are like a small box, and you are talking about a bigger earth at that scale. Like इसी अर्थ पे एक छोटा बॉक्स रखोगे, इट्स सो इनसिग्निफिकेंट. नाउ द बिगर अर्थ लाइक 36,000 किलोमीटर ऊपर, और तो इट्स इवन मोर इनसिग्निफिकेंट. प्रॉब्लम इज स्पीड. इवन अ डस्ट पार्टिकल. Exactly my concern. The last thing you want is to get hit. And I mean, I think something similar happened with the James Webb Telescope also, where a small high-speed object hit it recently. And really, you realize in that moment that we are just. It's really luck when you're there. Yeah. And the only thing that's going for you is that space is so expansive. कि the likelihood of something running into you is less. हाँ, पर अभी थोड़ा बदल गया ना. all active like ISRO and all, they do active maneuvering when they know if something is coming. like वो रेडियस रखते हैं, अगर 4 किलोमीटर रेडियस में कुछ है आने वाला है, थोड़ा मैन्यूवर करके. प्रॉब्लम इज उसका आपके सैटेलाइट का लाइफ कम हो जाएगा. आपको फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है टू चेंज योर प्लेन और व्हाटएवर. अगेन अननेसेसरी. तो वो एक प्रॉब्लम है. More one cyber shark new member, welcome. Standing alone 18 months. Nirbhav 17 months. Durga Prasad, thank you, great dear. DD Singh bhai, very old, 25 months. Titiryu Chakrabarti, thank you. So we are coming close by to -12 or whatever. So far so good. PSLV usually workhorse है, पर फट जाती है अगर कुछ होता है तो. वो अगर आपको ग्राफ आपको दिखेगा, and if you see that graph going little bit here and there, then something to worry about. Yes, hoping. You know, the only advantage in rocket launches in the last few years, I mean, especially after the failed NASA launches of the early 2000s. I think early 2000s was when, early 2000s is when the Columbia rocket burnt up on re-entry. So 2006,
not sure. I think on some level what gives me a lot of this thing nice feeling is कि कोई at least इंसान नहीं है उस पे, uh, uh, you know. So even if it goes wrong, at least there's not a person in there that is going to die. करेक्ट. और यही रीज़न है कि गगनयान डिले होने वाला है. छोटा सा Yeah, छोटा रिस्क वो नहीं ले सकते, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. मेन तो absolutely. And उनका इमेज खराब हो जाएगा इसरो का, एंड देन फंडिंग एंड एवरीथिंग, पब्लिक परसेप्शन कैसे. अब नासा की तो लग गई थी, दे हैड टू कैंसिल स्पेस शटल एंड ऑल, शट इट डाउन एंड ऑल. लाइक वो रशिया पे डिपेंडेंट थे उस टाइम, दे वर रेडी टू बी डिपेंडेंट ऑन रशिया. because they just couldn't handle the PR, you know. Invariably, democratic governments tend to be slower when it comes to these things because they are worried about getting re-elected. You know, a Chinese government doesn't care. Or can afford to not care. 2001. चाइना कैन सिंपली गो टू हाइड इट एंड विल नेवर नो कि ऐसे कुछ हुआ. बाद में सैटेलाइट्स इमेजेस से कुछ पता चला तो, बट वो बहुत सेम थिंग चंद्रयान 3 के लिए अगले साल जब होगा, अगर ये फेल हुआ तो वो बहुत बड़ा PR इशू बन जाएगा. और यू नो फ्यूचर में द प्रॉब्लम इज मंगलयान 2 डिले हुआ उसी की वजह से प्रोबेबली. So they can't host a rover on Mangalyaan 2 until they actually do a extraterrestrial landing. Yeah. And unless you can do it on moon, how are you going to go all the way to the Mars? Moon तो easiest है in our neighborhood to land on extraterrestrial. So अगर Mars पे करना है, they need to do first moon, उसके बाद वो consider कर सकते हैं. और कंसिडर होने के बाद वो डिज़ाइन फेज वगैरह उसको और टाइम लगेगा, तो मंगलयान 2 will continue slipping. Chandrayaan 2 का एक डिले. Yeah, I was reading about this small piece on this independent company making rovers for the moon. Team Indus. And they were just Team Indus. नहीं बाहर का ही कोई company था, it was not a Indian company. And they were making these box rovers, you know, small ones. And it blew my mind because the guy's like, yeah, eventually it will just glide over the surface because it's so light. And it's going at this certain momentum. It won't be, you know, it won't really touch the ground the way. And that in itself, I was like, हाँ नहीं, इधर का तो physics ही मतलब physics same है, but इसका physical output कुछ अलग ही चल रहा है इधर. हाँ, right. यार मेरे को जाना है चांद यार, मैं हल्का भी रहेगा उधर. Yeah, I hope ऐसे सस्ते में फ्यूचर में 20-30 साल के बाद ट्रिप्स करने मिले चांद भी. बकेट लिस्ट ना, बकेट लिस्ट. हाँ, सीरियसली आई होप. आई मीन कैन यू इमेजिन कि एक जनरेशन था जिसमें लोग बोलते थे कि जिंदगी में एक बार हज पे जाके आऊं या फिर मैं गंगा में मैं डुबकी लगा के आऊं. और हम है कि हम कह रहे एक बार ही जरा मून पे जरा. इफ नॉट मून, एटलीस्ट धरती को देखना है फ्रॉम लाइक 4000-5000 किलोमीटर अबव, ताकि वो गोल दिखे एकदम, जो हम इमेजेस में देखते हैं ना, वो ताकि असली में देख पाए. स्टार ट्रेक में एक सीन था जब कैप्टन कर्क द यंग वन वो फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा होता है और वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग अप, बट वो सीन देखता है एंड देन इज लाइक, ओ नाउ आई नो व्हाई. Yeah, no, a lot of astronauts have spoken about this as well. The first time you see the Earth from that POV, it fundamentally changes something inside you. Because for the first time you actually understand कि तुम्हारा scale कितना छोटा है universe के scale पे. Correct. It's fascinating time. Yeah. ये अंकल जो दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो स्क्रीन सेवर देख रहे थे. तूने देखा? वो स्क्रीन सेवर देख रहे थे. I forgot his name. कोई नेम याद कर देगा. So he's the one who says performance normal, mission director शायद वो. Very nice person. Okay, guys, going into the last 7 minutes of this, if you have friends who are going to watch with us and are not here yet, get them here because we're at 1.3. 1.3, yes. You can get to 1.5. I think 2000 also is a fair goal. Please make sure you hit like and keep commenting so that the algorithm pushes this forward. Sorry GS, मैं ये सब कर रहा है because मेरे को अभी आदत हो गया ये सब करने का. आवाज गया. You avoid it. Yeah, I know. That's why. Yeah, that's why I'm here, na. मैं I don't know. Problem is मेरा वो है कि empathetic कि if I was the audience, would I be irritated by that person saying
such a thing. Yeah. It's I think in my experience it's irritating if you make a big long thing out of it. You just say it very quickly, then people हाँ are reminded. Although I हाँ must say this is one of the best streams I've been on in a while, where it's 1.3K people watching with more likes than there are viewers. oh okay That's always a good feeling. तो अगर 5 मिनट के लिए भी आए हो तो लाइक ठोक के जाओ, is my only point. चंद्रयान 3 में भी दिसंबर 2002 में होगा, होप सो. चंद्रयान नहीं 3 हाँ नहीं नहीं चंद्रयान नहीं 3 नहीं अगले साल. मतलब, हाँ, I don't think it's gonna लॉन्च happen. विंडोज है ना, दे कैन ओनली गो इन सर्टेन मंथ्स. इट्स इधर दिस सितंबर और अगले साल फेब एंड ऑफ फेब वैसे कुछ. तो आई मीन और वो भी और डिले हो सकता है. बट इफ इट हैपेंस February दैट विल बी इनक्रेडिबल, क्योंकि 2019 या 20 में फेल होके इतने जल्दी दे केम बैक अराउंड. वो स्पेस टर्म्स में बहुत फास्ट है. Yeah, absolutely. Although it also feels like कोई जरूरत नहीं है, मतलब take your time, you know. Like, I don't want you to. Can't mess this up. Yeah. मेरे दिल को नहीं जमेगा अभी. हाँ. ऑल्सो नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम ये है कि गगनयान एंड चंद्रयान को एंड अप इन अ फाइट, क्योंकि वो दोनों सेम रॉकेट इस्तेमाल करते हैं GSLV Mark 3, और उसकी बहुत नखरा है. मतलब वो 2 महीने लेता है बस रेडी होने के लिए, जस्ट टू असेंबल एंड एवरीथिंग. एंड यू हैव ओनली दिस पैड, ये सेकंड लॉन्च पैड जिस पैड के ऊपर है, दिस सेकंड लॉन्च पैड ओनली कैन सपोर्ट GSLV Mark 3. तो और प्रॉब्लम इज मेनी पीपल डोंट नो कि एक बार लॉन्च हो जाए इस पैड से, दे हैव टू स्पेंड 15 to 1 month जस्ट फिक्सिंग द पैड अप, रिफर्बिशिंग इट. क्योंकि छोटे मोटे चीजें टूट जाते हैं. हाँ तो रिप्लेसमेंट्स वगैरह उन्हें करने हैं, देन अगेन वेरीफाई टेस्ट. एंड तो GSLV Mark 3 इज वेरी क्या वो उसके 2 बड़े बूस्टर्स हैं ना, तो वो बहुत डैमेज करके चले जाते हैं. तो उस केस में दे टेक आई थिंक 45 days to 30 days जस्ट टू गेट द पैड ऑपरेशनल आफ्टर GSLV Mark 3 लॉन्च. तो आप इमेजिन करो, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, गगनयान ऑटोमेटिकली गेट्स अ 1 month plus डिले इफ इट वांट्स टू लॉन्च इमीडिएटली, और इट हैज टू वेट इन द व्हीकल असेंबली बिल्डिंग, गेट रेड. मतलब वो क्लैश हो गया उन दोनों का अगले साल. तो क्विकली हाँ, ये कृपाल पटेल न्यू मेंबर, वेलकम. क्वांटम AI Geek 19 months. इनका नाम आई थिंक क्वांटम संगणक ऐसे कुछ तो था, वो ही हैड अ हिंदी नेम. तुषार राज, ये गोल्ड मेंबर 25 months. हाइड्रेटिंग बाई 7 months. पैलिंड्रोम 14 months. और अरुणा व अगरवाला न्यू मेंबर, वेलकम भाई. तो जो भी देख रहे हैं नया, ऐसा कुछ नहीं है कि मेंबरशिप ज्वाइन करना ही है, ऐसे कुछ आपको कंटेंट सेम ही मिलेगा, बट यू गेट टू ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर जहाँ बातें करते हैं, रिसर्च वगैरह होता है. एंड ऑल्सो यू गेट वॉलपेपर्स एवरी मंथ. आकाश भाईयर इज अ क्या वो लेगेसी मेंबर. लेगेसी बेटर वर्ड. मैं तो उसको बोला भी कि मैं तेरे को घर पे पैसे भिजवा देता हूँ, ये सब मत करवा. यूट्यूब को क्यों दे रहे हम बीच में? इस प्यार के बीच में यूट्यूब की जरूरत नहीं है. हाँ, फॉर दोज हु फाइंड यूट्यूब इनकन्वीनियंट, और 1700 पे आए हम लोग अभी. फॉर दोज हु फाइंड इनकन्वीनियंट, यू ऑल कैन यूज बाय मी अ कॉफी लिंक. वहाँ पे वो UPI वगैरह ऑटो पे दे हैव सेट अप सो गुड. बाय मी अ कॉफी वालों ने रेजर पे वो लोग किया है. यूट्यूब को उनसे सीखना चाहिए. मेरे को आई एम श्योर वो लोग ने, आई एम वेरी श्योर कि वो लोग, हाँ, मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुए वो कार्ड वाले इशू के साथ. बट वेरी हैप्पी टू गिव यू मनी ऑन बाय मी अ कॉफी एज वेल, एज लॉन्ग एज यू गेट इट. वन एक ही बस है फिर. Okay, so since we are in the last 3 minutes to launch, thank you so much for joining us. If you're just joining us, I am the guest, but I'm acting like a host for no reason. With me, I am with Garib Scientist, who, if you don't know, you should know. Science channel #1 out of India. Dhananjay, thank you for the super chat as well. Last 2 minutes, I just want you to quickly tell me, इसमें वो सफेद क्या होने वाला है next 3 minute में? हाँ, तो अभी आग लगेगी, and we both will go silent up till T+6 minutes or so, third stage separate होने तक, क्योंकि उसके बाद एक लंबा कोस्ट पीरियड है where we'll have lot of time to talk. Okay, superb. Dhananjay, thank you for the 100. ISRO back with its world class. हाँ, okay. Also, many don't know, but Aakash is a sound engineer, so we'll have sound questions for him after that. उसके बाद एक specific. At best diploma, but sure, I will try my best.
Acha, Dhananjay is asking one question. How does SpaceX launch so many rockets frequently, whereas ISRO takes so much time? We just discussed this, Dhananjay. It has to do with vertical integration, so to speak. A lot of different people, vendors involved, and therefore it takes a lot of time to put everything together. Also, government versus private. Also, demand. The market should exist for such a thing to do. Yeah. Cost वगैरह. Jaideep, thank you for the 100 rupees. Very much appreciate the super chats, guys. Keep those coming if you feel like. Otherwise, just make sure you like the stream of almost at 2,000 people watching. And down to the last minute or so before we go. एक प्रमोचन यान तैयार किया है तथा उपग्रह तैयार किए हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही रोमांच का समय होता है. -1 minute. ओके, मेरे को 10 सेकंड्स में मेरा वीडियो ऑन करना है. -55 seconds. Because I don't have control here. -50 seconds. All sequences on. -45 seconds. -40 seconds. मेरे को 10 सेकंड क्यों दबाना है? I'm scared. Okay. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PSPP opened. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +5 seconds. Stop normal. P1 tracking. P3 tracking. P2 tracking. PSLV-C53 performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा. गर्जना करता हुआ PSLV-C53 आकाश में. आप देख सकते हैं कितना साफ नजारा है, बहुत ही रोमांच भरा नजारा. That's a marvelous liftoff, and the PS1 performance is according to the expectations for this mission. First stage performance normal. प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य. Sharwan is in main auto. +1 Sharp is minute. in main auto. अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ PSLV-C53. Thrust developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons. Auto tracking SCBT1. यह चरण प्रथम चरण है जो कि First stage performance normal. 8.2 सेकंड तक चलेगा. इस दौरान इस चरण में 4,846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और वह प्रमोचन यान को 50 किलोमीटर की दूरी प्रदान करता है. It is 1 minute 45 seconds from launch, and the altitude attained is 49 kilometers. Why the shots were incredible. At 51 kilometers. Separated. Second stage engine Better started. लिया है. Close loop guidance initiated. +2 minutes. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. Second stage performance normal. You can see the flight events on your TV screens. The recent one has been the initiation of closed loop guidance. Just want to draw everyone's attention And to the PS2 fact currently that it's operating. going at almost 2 kilometers a second, guys. It is 2.5 minutes from the हमारा launch. पर प्रति घंटे होता है स्पीड लिमिट इंडिया में. ये 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जाएगा. मतलब मुंबई से दिल्ली इन द्वितीय चरण नो टाइम 150 सेकंड का होगा. Second इस stage दौरान performance यह 800 normal. किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 174 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा. इस चरण के दौरान 2 मुख्य घटनाएं हो रही हैं. Payload bearing separated. वैसे इनका हिंदी है बहुत हाई अभी ग्रेड. आपने मुझे बस देखा. 154 किलोमीटर ही समझ में आया. ऊष्मा कवच पृथक हो चुका है यान से.
Second stage. तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। अब इसका अर्थ है अब जायरोस्कोप और एक्सेलरोमीटर की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। घने वातावरण से बाहर जाने की वजह से हमारे रॉकेट्स को ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं SpaceX की तरह। है, इसलिए उसे पृथक कर दिया गया है। already, पर लाइव नहीं दिखता। Shar and Port Blair stations currently tracking the Tushar, launch thank you vehicle for letting us know trajectory. this. Delhi to Mumbai in roughly 700 seconds. That's not bad at all. 700 सेकंड मतलब 10 The मिनट से second कम। stage of मतलब जब तक PSLV वो air increases hostess the आएगी velocity पानी of देने को, ongoing launch और vehicle बोलेगी कि from 1.4 पानी kilometers per पानी second तब तक to आप 4 पहुंच गए। kilometers per second. Plus 4 minutes. द्वितीय चरण का प्रदर्शन सामान्य। अब कुछ ही सेकंड्स में यह बंद हो पृथक किया जाएगा यान से। उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण का प्रज्वलन Second stage शुरू होगा। separated, third stage ignited. The second stage has been separated and the third stage called the PS3 has begun Third its stage operation. performance normal. It is a solid propellant based motor. It increases the relative velocity from 4 to 7.2 kilometers per second for the mission requirements. Thrust developed is 240 kilonewtons. PS3 का प्रज्वलन काल 125 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 335 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. See, even in this case उनके पास एनिमेशंस है, बट वो लिटरली मिशन कंट्रोल बिल्डिंग में कैमरा पॉइंट कर रहे हैं स्क्रीन के पास। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। वो अलग करने में एफर्ट नहीं डाला है। तृतीय चरण के अंत तक यान की गति 7.259 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। Third stage performance normal. The total burn time for HPS-3 is 132 seconds. Plus 6 minutes. In this duration, it will add 60 kilometers to the altitude. So our my velocity figures are off by a lot, but वो ठीक है, इसरो ने रिलीज नहीं किया था डेटा, वो सब गेस गेम था। तो ये अब left कुछ ही वाले को क्षणों उतना में PS3 Third stage बर्नआउट हो action जाएगा। completed. जी हाँ, प्रज्वलन समाप्त हो चुका है HPS-3 का। Vehicle in combined hosting phase. तो अभी आकाश भाई you अब can यह come out of कंबाइंड that. कोस्टिंग फेज पर है, जिसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज कहते I'm हैं। here. यह फेज 200 सेकंड तक चलेगा। अभी थिंग ये है कि ये बहुत टाइम ऐसे कोस्ट करेगा। सो ये अटैच PS3 को पृथक कर दिया थर्ड जाएगा। स्टेज जो बंद हो गया और टेक्निकली बंद हो गया, बट इट इज अटैच टू द Plus फोर्थ 7 स्टेज। minutes. ये प्रॉब्लम इसका ये है कि 420 सेकंड ये की सिंस तरह सॉलिड बूस्टर है, वो थोड़ा बहुत उसका रेसिडुअल बर्न चालू रहता है। तो इवन दो इट इज शट डाउन टेक्निकली, थोड़ा बहुत चालू रहेगा। तो अगर इसरो अभी सेपरेट करती है, तथा ऊंचाई पॉसिबल है कि दैट थर्ड 270 स्टेज कैन कम एंड क्रैश विद द फोर्थ स्टेज। तो अभी बहुत टाइम ये दोनों अटैच आगे Now, जाएंगे। though the इट्स कॉल्ड third stage कोस्टिंग, has कोस्ट completed फेज। its action, it continues to coast along with the fourth stage and the अभी अगर आप spacecraft. टाइमलाइन देखो तो दिस डॉट्स आर It will सेपरेटेड do अकॉर्डिंग so टू for the टाइम। next 200 seconds, during which तो time और there is 2-3 129 मिनट kilometers gain दोनों in को the साथ में ही altitude. बिताना है। The coast phase exists yeah, while the rocket is 1,000 to 2,370 kilometers downrange from the launch port. Vehicle performance normal. Port Blair and Brunei stations tracking presently. कुछ भी मेहता इज 8 माय minutes. फैव जीजी। ओजी जीजी तो गुड गेम होता है। सॉरी।
यान ओके, के सभी तंत्र आज मुझे सामान्य पता काम चला करते जीजी हुए का फुल फॉर्म। मैं देखता था डिस्कॉर्ड पे जीजी जीजी जीजी, आई थॉट इट इज सम। मुझे तो अपने उद्दिष्ट हम लोग यूज दिशा करते थे को गुड गेम बोलने पूरी को, अभी तरह पता नहीं अनुसरण यूथ करता में क्या हुआ कर दिया उसने। PSLV C53 अच्छा, लव टू योर इनस। ब्रो, यूनिस का बहुत मजाक हुआ था व्हेन नासा अनाउंस्ड इट मिशन। देयर वर लाइक दोस जोक्स ओनली ऑन ट्विटर। हम्म। Vehicle performance normal. भाई 9.1 क्यों नहीं गई स्पीड? Just being I think developed you are presently, but the launch confusing it flight with will the continue meters to per be second, or controlled. did somebody say कि 9.1 kilometers per second जाने वाला? पता नहीं किस वेलोसिटी जी पे हाँ, इस जाएगा। आई दौरान थिंक दिस विल हाँ, लेवल आउट एट 7 पॉइंट हमारे समथिंग, ग्राउंड 7.6। yeah, स्टेशंस जैसे शारपोर्ट, ब्लेयर, ब्रूनेबैक we are ग्राउंड going over स्टेशंस at में 8. से वर्तमान Still, में how are we still gaining पुणे speed तथा if बेयार the thruster has been ग्राउंड cut off? स्टेशन तो नाउ इट यान डिपेंड्स के ऑन व्हाट आंकड़े हम काइंड तक ऑफ ऑर्बिट पहुंचा इट रहे इज। हैं। इफ द ऑर्बिट ऐसा है कि दूसरे साइड, उसके अपोजिट साइड ऊपर जा रहा है, तो द फादर अवे तुम धरती से हो, उतना ज्यादा स्पीड होगा तुम्हारे पास। तो ऑल्दो अब कुछ तुम ही क्षणों थ्रस्ट में नहीं हम कर रहे हो, बट देखेंगे ऑलरेडी वो पार्शियल ऑर्बिट बन PS3 चुका है, स्टेज का प्रतीकीकरण। Right. तो वो ऑर्बिट का स्पीड होगा अभी। एंड दिस स्पीड इज रिलेटिव टू अर्थ सेंटर्ड इनर्शियल। Hmm. तो इट्स लाइक 400 मीटर्स पर सेकेंड ऐड हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि हम धरती के ऊपर वो हिल रहे Third हैं। stage separated. ओके, सो नाउ थर्ड स्टेज इज सेपरेटेड। अभी और थोड़े टाइम लेगा और उसके बाद फोर्थ स्टेज There स्टार्ट is a होगा। confirmation from the range operations director that the third stage Long has been coast. separated. Vehicle performance काफी लंबा normal. कोस्ट। The fourth stage and spacecraft अभी are आप देख following सकते हो their ऊपर intended trajectory very वो closely. उनका तो ऑब्जर्वेशन था इन दैट मेश इनसाइड PS4 is yet देयर to वाज be सेकंड completed. सैटेलाइट। तो ऊपर का पहले निकलेगा, मेश निकलेगा, उसके बाद वो सेकंड सैटेलाइट उसके अंदर से बाहर आएगा। Hmm. इट्स कॉल्ड DLA इन इसरो's टर्म्स, डुअल लॉन्च एडाप्टर, मतलब एक ही इसके ऊपर। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर वैसे अपनी किसी को नजर ये इसमें ग्राउंड बनाए ट्रेस और रखते ये हैं ग्राफ्स का उन्होंने मीनिंग घोषणा जानना है तो की मैंने एक कि डेडिकेटेड PS3 वीडियो बनाया को उसके ऊपर। पृथक कर दिया गया है तथा वो कहीं तो मिल जाएगा, यान अपने सुनिश्चित इसरो पथ ग्राफ पर सर्च बढ़ता कर लो, हुआ देयर इज नो अदर। Hmm. Aren't people allowed to see the video live? Yeah, people are able to go. You can get a visitor pass to go and यह see फेज it. You करीब definitely, absolutely can. 304.6 सेकंड्स तक However, चलेगा। उसके ये पश्चात मुझे हमेशा लगता है, PS3 मुझे देखना है रॉकेट लॉन्च लाइफ में, बट मुझे ऐसे टाइम पे देखना है जब वो विजन से चला जाए और मैं नीचे स्क्रीन पे फिर कंटिन्यू कर पाऊँ वो GoPro से। हाँ, क्योंकि वहाँ तो क्या बैरली फ्यू सेकंड्स का टाइम मिलेगा Yeah. आपको, देन वो ओवर एवरीथिंग। So it's one of those things like रॉकेट लॉन्च अगर मैं मोहल्ले में है तो मैं देखने जाएगा, but otherwise मेरे I को don't think so. GSLV Mark 3 की जाना है, उसके दो बड़े बूस्टर्स है ना, सो इट फील्स लाइक अर्थक्वेक। अंतिम चरण है Right. बहुत सारे जो साउंड कि वेव्स वगैरह आ तरल जाते हैं, नोदक इट पर मूव्स आधारित चरण है। यू। Oof. इसका प्रज्वलन काल इनफैक्ट मार्क 3 के लिए दे हैव टू 132.6 पंप वाटर बिलो द और यह पैड, कुल ताकि वो 14 नॉइज जो है वो 6 एब्जॉर्ब हो किलो न्यूटन और पैड को डिस्ट्रॉय न करे। उत्पन्न वही वो कर साउंड उपग्रह इंजीनियर को वाले पार्ट उनकी में आपको उद्दिष्ट एक्सप्लेन कक्षा करना में है। स्थापित करेगा। आर यू गाइस लाइक थॉट कि पानी इन absorbs उपग्रहों में water, सर्वप्रथम water absorbs sound, PSEO I mean, what energy? water doesn't. I mean, इसके पश्चात so I mean, what I've learned is audio engineering from the. न्यूसार तथा It's स्कूप more audio engineering than sound प्रदर्शित engineering. किया So जाएगा। what I have learned appeals more to use the recording of music, voice, and mixing and mastering For and, this such. mission, the Okay. PS4 will function as The Physics ocean, PSLV yeah, still water. I mean, physics, yes, but to the extent ki like 1/3 rule of wavelength. अच्छा, Type वाली चीज है कि like it's just more to do with the context of what can absorb sound, what can reflect sound, what kind of sounds do you want to reflect, what dictates how much a sound is reflected, as a stabilized platform. and a lot more to do with the Attitude treatment of sound, stabilization is from achieved side chaining to using a compression to dedicated navigation, amplification guidance and so control on. system. okay. OM derives the power Sound, from solar what you are panels using mounted analog around sound the PS4 is essentially just a wave, it's a हाँ, current, हाँ. right? lithium-ion battery. So, and that's what's making a diaphragm go back. Navigates using four So whether it's your sensors, earphones or magnetometer, a big speaker, gyro, it's and what navigator. we're essentially focusing on is the dispersal of rather the vibration of the diaphragm in a way where sound हाँ, is done in a इसलिए certain way. बेस ज्यादा फील होता है because lower frequency, higher wavelength. And Mrs. Dhruva Yeah, so it's called the 1/3 rule, where basically if the I think something the size of the object is
less than 1/3 of the length of the wave can go around the object, which is why longer wavelengths tend to go around objects and shorter wavelengths tend to bounce off objects. But I can 800 सेकंड की दूरी but I पर आ can see चुके हैं। water as being used to absorb generally the impact of यान because की high सामान्य heat प्रदर्शन coefficient. करता हुआ Although I don't know how still water, because still water tends to reflect sound. स्टिल वाटर नहीं तो जैसे उड़ रहा है इट पंप्स ऑन द एग्जॉस्ट प्लूम Okay. PSLV So it को turns यूं into ही steam, भारत इसलिए वो का बड़ा विश्वसनीय smoke cloud यान दिखता नहीं है। कहा जाता। Right. नासा के केस में स्पेसएक्स के केस में दैट इज ऑल वाटर 54 पंपिंग एट द उड़ानें बेस कर चुका ऑफ है। द Right. उसमें 3 विकासशील उड़ानें थी तथा 51 स्पेसएक्स के वाणिज्यिक वगैरह मिशन पंप्स रहे ऊपर हैं। दिखते हैं इसके हिडन इनमें है से कुल 53 पीएसएलवी के उड़ानें केस में आई पूर्णतः डोंट सफल रही थिंक हैं। दे पंप इस तरह उतना एनर्जी PSLV लेवल नहीं है की बट श्योर नहीं विश्वसनीयता संख्या वन क्वेश्चन फॉर यू 97.3% फ्रॉम स्पेस है टेक और इस एक्सप्लोरेशन कारण वाज से ही इसे इसरो का व्हाट वर्कहॉर्स डू यू भी कहा थिंक ऑफ जाता है। अपकमिंग स्पेस यूट्यूबर्स किसी को Are there any इसके 4 upcoming space संरूपणों का YouTubers उपयोग except इसरो for में किया you? जाता है। देयर आर मेनी अलग-अलग निर्धारित देयर कक्षा के अनुसार इनका I चयन don't know, किया man. I जाता haven't है। been able to catch a lot of them. India वाले तो मतलब I only watch you प्रॉब्लम and विद इंडिया maybe a वाली couple of. कंसिस्टेंसी नहीं है निर्धारों को वो तो मेरे में भी हाँ, नहीं है की दीर्घवृत्ताकार नहीं, कक्षा but में I think it's स्थापित also किया जा रहा है। a lot of what YouTube recommends from कुछ ही India क्षणों में goes हम more देखेंगे into the fiction space. I like to call it mythology fiction space. Okay, well, I don't think he meant that. He meant like हाँ, proper space. proper वाले, yeah. Space या science है जो भी है. Oh, chalo, good. I have something to talk to you after this. Yeah. To ask you who all. Engine started. Okay, so fourth stage engine has Yeah. begun. I'll take some quick mentions. Nisarg Gajjar 9 months. Samarth Dubey, thank you, Plus bhai. 15 Shauruk, Shauri First Kumar, stage thank you. performance normal. Alok Jha, thank you, bhai. The fourth stage has been Space Tech ignited member and for it's 3 months. developing intended thrust. Vinesh Aluri, new member. Somebody had asked what is difference It between operates liquid till fuel and the solid orbital fuel. वो solid parameters fuel for the basically injection of दिवाली rocket आप satellites are एक बार achieved. लगाओ वो उससे घूमने नहा वाला नहीं नहीं। सकते. You can't stop it and We have 15 but the minutes, 30 advantage is seconds it's from the cheaper, launch. higher energy, The short burn. altitude is तो boosters के लिए best है. 553 kilometers. Liquid is depending on your engine you can start stop. ये जो अभी है वो fourth stage उसमें एक ability है you can deploy one satellite to one orbit, let it separate, then Fourth fire it stage again, take it the performance other one to normal. higher orbit, again fire. तो वो सब restart capabilities वगैरह आपको मिलती है. PSLV-C53 का सामान्य प्रदर्शन करता गुड हुआ एनर्जी डेंसिटी और अपनी भी उद्देश्य ज़्यादा कक्षा की ओर एनर्जी बढ़ता छोटे हुआ से जगह में आप स्टोर कर सकते हो ऑल दो सॉलिड्स में वो ज़्यादा है सर्वप्रथम बट फिर आप DS कंट्रोल कर की सकते हो कक्षा तो प्राप्त ज़्यादा की चाहिए जाएगी जो कि thrust कम चाहिए 577.5 किलोमीटर की है तथा इसे मेरे हिसाब से तो देखो सॉलिड से नहा सकते नहीं और लिक्विड से नहाना चाहिए नहीं. बस ये है मेरा लेमैन इनपुट. व्हाई एवरीवन समोसा किसी ने कोई समोसा खा रहा था अच्छा खा रहा था क्या? आई वुडंट I माइंड अ think समोसा. सीरियसली यहाँ बारिश भी हो रही है मौसम टू गुड है एंड बारिश में समोसा से अच्छा क्या हो Back सकता है in Brunei Are you in stations are still Goa or trying. are you in? हाँ गोवा Yeah, nice. इसके बाद कुछ मैगी वगैरह बनाऊंगा मैं मेरे को भूख लगी है Here's an interesting question. Very scientist भाई आपने स्क्रीन पे Speaking पैरामीटर्स और about the एनिमेशन कैसे satellites पुट taking किए? right in this हाँ mission, तो the prime satellite यूजुअली इसरो एक DSEO टेबल देता is है a जिसमें मेंशन करता है कि 10 मिनट बाद ये सेपरेट होगा इस वेलोसिटी पे इस ऑल्टीट्यूड पे multispectral केस में नहीं दिया, but payload we with good imaging dug it out capability that will from provide somewhere. full color images for Nine land samosa. classification I think that samosa. They're talking about that samosa. I and know. serving humanitarian assistance. and disaster Thanks for the input. Ayush on why the speed increases. That's always good to know. Oh, okay. We have approached fourth stage shut off. Fourth stage को shut off कर दिया ये because आप नोटिस करोगे while watching a rocket launch time बहुत जल्दी जाता है. Like we Yeah, just yeah. launched. PS4 18 minutes ago. is realigning itself 18 minutes हो to गए the कब के? correct attitude for the satellite separation. Okay, so we should have 3 separations now. अंतर आपके क्षेपण स्क्रीन की के ऊपर स्थितियां वो प्राप्त सर्कल की में जा events चुकी दिखेंगे. हैं होपफुली अब ये कुछ ही पॉइंट क्षणों करे में कैमरा उनके अंदर DSEO स्क्रीन एमिशन उपग्रह कंट्रोल के अंदर वेयर दे कैन सी लाइव वीडियो जो आप पूछ रहे थे रॉकेट Oh. स्क्रू समटाइम्स दे पॉइंट द कैमरा टू जो इट कि सिंगापुर के अभी हैं होप है कि उन्हें इस केस में वो अंतर्क्षेपित किया करेंगे जाएगा ओके देखो किया पॉइंट किया सो दिस इज द टॉप अभी आप मोस्ट ऑनबोर्ड डीएसईओ कंप्यूटर अर्थ की मदद ऑब्जर्वेशन से यह सैटेलाइट
कैमरा व्यू देख पा रहे हैं जिसमें DSEO satellite separated. तो अपने सैटेलाइट पे तो डाल सकते हैं, अभी सिंगापुर वाले को थोड़ी बोलेंगे कि भाई डाल दे यार हमारे इधर, नहीं, क्योंकि this उसको is on अच्छा the नहीं लग रहा है। stage. CEO को हाँ, हस्तक्षेपित fourth कर stage दिया के गया ऊपर है है। उनके तो उद्देश्य हाँ। कक्षा में। ये दिख रहा है। There we go, Need frame by improvement frame, here separating in Mission Control मस्त Center like a as slow the divorce. same satellite DSEO has been injected into its intended इनके पास orbit. ऐसा नहीं है कि टेक नहीं है, they have their own tech for You've been high watching the resolution in onboard orbit camera video, and they have visuals. flown it also before, but they're not using it for some reason. Next is the dual launch adapter separation, following which NEOSAR, अच्छा, अब ये ऊपर का Singapore's orbit, first adapter small separation. commercial I satellite carrying a although I small do think payload, कि will I'm separate. sure that there is somebody in China with a way more HD feed of this, Maybe like from some some completely unknown source. ground. I don't know if ground satellites. I think we'll have a problem tracking the object moving so fast. But there are telescopes which track space debris and all. But किस resolution पे वो अभी नहीं कुछ पता. ही क्षणों में हम तो साक्षी अभी बनेंगे न्यूसार अपना अगला separation. स्कूप 1 उपग्रह के अंतःक्षेपण के। Okay, just a second now. Now, was there a reinitiation of the first No, stage no, during this? इसके No. इस मिशन में नहीं है reignition. सब एक ही Okay. साथ. New SAR satellite separated. Right. तो अगला वाला भी हो गया. This is a SAR Group sat. 1 satellite separated. वो छोटा वाला भी हो गया शायद. PSLV-C53. Boom. DSEO Bye, bro. mission See you, accomplished. satellite. Landing Never of see you Lieutenant again. Director. See, ये था Hopefully. solar panels इस केस में देखो. Yeah, yeah. तो आकाश भाई, Successfully injected DSEO after this there will be a primary speech by chairman. two other satellites Mhm. into इससे third पहले orbit. do you want to promote PSLV-C53 anything, DSEO your mission show, is fully accomplished. या कुछ भी, anything you want to कुछ नहीं mention? यार, देखो मैं सब करता है और मेरा लिंक है चैट में पिन किया है जीएस में, देखने का है तो देखने का, नहीं देखना है तो हरी इच्छा, कोई टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, बस लाइक यू नो ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी, दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो क्या है मतलब, व्हाट इज योर नेक्स्ट शो, कौन से सिटी में जा रहे हो अभी? Continue to stay healthy and I have some shows. I have a show in Surat on Friday. Other than that, I don't have a lot of shows. Just in and around Mumbai for a bit. Some personal work going on till end of August, which I'll be talking to you as well about soon. और इसके साथ ही You to know. So yeah, that is there. So that's going on. But other than that, for that. yeah, you must. Looking forward to seeing you there as well. But yeah, that's all I have going on. And other than that, you can just find me on Instagram. I put up new funny reels thrice a week at least minimum. Stand up में डालता ही रहता हूँ और YouTube videos भी थोड़ी देर में आ जाएंगे. और बाकी कुछ नहीं यार, मैं बस ऐसे ही, मैं तो बहुत एक्साइट हो गया कि तूने बुलाया तो मैं आ गया. अभी इसमें प्लग भी कुछ करने का जरूरत नहीं है. Okay. चलो चलो आ गया चेयरमैन का स्पीच. Satellites of Thank you, NSIL, guys. DSEO, NewSAR and Scoop 1 in the precise orbit of 570 kilometer with a 10-degree inclination. So congratulations to NSIL for accomplishing this yet another major mission in this month, June itself. The first being the GSAT 24. Currently the satellite is in orbit, drifting to its intended location. So with this mission, all these three satellites are placed in the right orbit. And I hope that the further activities of the satellites will be taken up and the mission will be a complete success for our customers. And I wish all the very best to NSIL for major missions to take up in the coming days using PSLV. And PSLV is waiting for that to happen. Many more missions are on the way for the customers all across the globe to come and get successfully placed in orbit. So let me wish once again all the very best to PSLV team for this wonderful accomplishment, proving the high reliability and availability of PSLV for the global customers. I also want to tell that after the primary mission, the PSLV fourth stage is now going to write some poems in orbit. The PSLV orbital experimental module is going to be functional after this, taking over the control of the fourth stage from the primary mission computer to another computer which will take on from that. And the PSLV fourth stage will be a stage which is powered, generating power on board and stabilized with attitude control, and also having certain experiments hosted by some of the very young startups enabled by InSpace, the Dhruva and Digandra. They have hosted their payloads for experiments on board PSLV. And these experiments will continue, and we will get details about its functioning in the next orbit. Until then, let me thank you and wish all the very best to all of you for watching this launch of PSLV
once again from Sriharikota. So let me wish all the very best once again and then invite the mission director, Sri Biju, for his comments. This is something he's doing different versus previous chairman. He actually calls his teammates. But the old chairman Good gave evening more to all. future launch hints. A special good evening to all my colleagues and friends in different control centers as well as ground stations spread geographically at different locations. A few seconds back, all of us have witnessed a wonderful launch of PSLV. PSLV-C53, which is PSLV in its 55th launch, that is PSLV-C53, has majestically taken off from the second launch pad and injected three precious satellites in their desired orbits. PSLV was in a different configuration this time. It is the core alone configuration, and we are coming back to SLP with this variant of PSLV after a pretty long time. So we had to introduce certain changes, and also in vehicle systems we had introduced some other changes to ease to improve the productionization of PSLV so that we can keep meeting the growing demands of customers. And all those changes which we have implemented have yielded results. I profusely thank our New Space India Limited for having reposed their faith in ISRO and PSLV and for having selected us for taking this prestigious customers to their desired orbits. I also wish our satellite team a wonderful time in space, maybe even surpassing their design life. I wish you all the best, sir. With this, usually our mission would have been completed and probably my words here also would have ended. But as our beloved chairman has hinted here, we have set our eyes really high in this particular mission. C53, even after injection of the satellites, is continuing its mission. It is a secondary mission as far as the PSLV is concerned, and the details have been given by our chairman ISRO. PSLV, as you know, it is a four-stage vehicle. After first stage, second stage, third stage, the functions are over. Those will be ejected, and PS4 will take the satellite into its desired orbit. Once the orbit is achieved, PS4 will eject the satellite into the orbit, and it will continue on its own. From this point, we thought we will take over PSLV. We will give some energy to PS4 and try to do some very cost-effective experiments which can satisfy the growing demands of startups, of our student community, as well as our scientific community, because the platform is available. Left to itself, it would have probably taken its own course, it would have tumbled, it would have wobbled, or it would have somersaulted, all those things. But given some energy, probably we will be able to continue the active PS4 for some more time so that the platform is available, all the resources are available, you keep some payloads, you keep some scientific payloads there, and definitely it can serve a secondary purpose also. That is where we have set our eyes this time. And definitely we are going to achieve it. We are targeting that. And this particular idea for this mission was conceptualized and implemented in almost a record time of something like 3 to 4 months, maybe in 3 months' time. And it is effectively, as I told, 2 missions rolled into 1 mission. Effectively, 2 missions rolled into 1 mission. So, huge effort has gone in from all centers. In fact, for this particular mission, all centers of ISRO have contributed, and the dedication and the extremely hard work put in by all members of Team ISRO is yielding results. I salute all of you for the wonderful contribution you have given. I also thank profusely our review forums, different review forums, as well as our administrative as well as auxiliary systems, services for supporting us throughout the entire campaign as well as realization of this vehicle. I also thank my own project team being led by Sri Srikanth as well as Sri M. Jalal, Vehicle Director and Associate Vehicle Director, who always are on their toes to ensure that only high reliable systems are getting into the vehicle. I also thank all our industry partners spread over different areas of the country for delivering high quality systems for this vehicle. Before winding up, I would like to acknowledge the sincere contribution as well as the
untiring support being given by all our family members, our parents, our siblings, our kids, our spouses, everyone. Because without this, definitely a mission of this dimension will not be possible. I salute them also for facilitating us to keep on contributing to ISRO, so that always the name ISRO or the flag of ISRO, which is the pride of our country, flies higher and higher. I once again thank each and every one of you, particularly our seniors, our mentors, as well as members of very senior professors of our erstwhile MRR forum, who continues to guide us, even personally calling us and giving very precious pieces of advice as well as guidance, just to ensure that PSLV success saga continues. I once again thank each and every one of you for this wonderful mission that we have witnessed now. Thank you, good night. I invite Sri Radhakrishnan, CMD NSIL, for his comments. Good evening, ladies and gentlemen. NSIL is, first of all, let me extend a very hearty congratulations to Team ISRO for supporting New Space India Limited in undertaking such a precious mission for our Singapore customer. In fact, NSIL is really excited to see the successful launch of PSLV-C53 with all the 3 Singapore satellites that were on board. As you are all seen, a beautiful deployment of all the 3 satellites. Primarily, if you look at this particular mission, DSEO was the primary in this particular mission with 365 kg of mass meant for Earth observation. And another innovative thing that has been carried out in this particular mission from the customer perspective was the launch of NewSAR, which is a microsatellite with synthetic aperture radar kind of capability, again for the Earth observation purposes. The third satellite was COBE, which was a technology demonstrator. And I think as we witnessed this beautiful launch, I don't think the customer would have asked anything more than the kind of precision with which the orbit was deployed, the 570 kilometer with 10-degree inclination. It was really a very momentous day for all of us. In fact, our association with the Singapore customer has been quite long. And this is the second time they have given us an opportunity to undertake the dedicated mission. As we used to always discuss, whenever we work with the Singapore team, we feel the kind of technical and the personal relationship we share. We never felt we are taking a customer satellite mission. It was more like a national mission that we have been undertaking. I'm sure, I think in the years, Singapore will look forward to us for supporting them in all their future launch and space endeavor. And before I conclude, I would like to join Chairman ISRO, Secretary DOS also to say that in a span of 1 week, this is the 2 big missions New Space India Limited has undertaken. As you may be knowing, a week back on 22nd of June, we had the successful launch of our communication satellite from Kourou. And in the next 7 days, we have this big mission that has been undertaken. I really thank all the teams here for supporting us. And I'm sure in the coming months and years, we'll have many more dedicated missions coming up from New Space India Limited, both for national and international customers. With this, I just conclude. Thank you once again, and congratulations to all of you. Jai Hind. Let me offer my thanks to each and every one of you across the ISRO centers for contributing to this mission, and also for all those who are watching this program live and supporting Indian Space Research Organization and Department of Space for our endeavor to make our country proud on having our capability to build, launch, and have the space program very effective for our country. Thank you so much once again. So, Aakash bhai, I know you are in a hurry. So, first of all, thank you. I think ये काफी last minute था, and ISRO's launches are only last minutes. Can't help it. So, yeah, no, I'm very glad that all of them did time. Like all of them spoke, and it's also nice to hear that there's more going on apart from just the satellite launch. So thank you for having me, dude. नहीं मजा आ गया. I've done podcast also Aakash bhai के साथ. You can check it out. Yes. And
फॉर दोज हु आर मेंबर्स, आज रात को कॉल है 9 बजे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलॉन मस्क स्टारशिप एंड व्हाई हिज क्लेम्स डोंट मेक सेंस एंड ऑल. डिबेट होने वाला है. और क्या बोलने, कुछ तो बोलना. आई हैड 3 थिंग्स इन माइंड. वन, हाँ, थैंक यू अटानू भाई, एस्ट्रोबॉट भाई फॉर मॉडरेटिंग. इट वाज अ टफ चैट आई हर्ड, और बहुत पॉलिटिकल नॉनसेंस वाले लोग आए थे, बट यू ऑल कंट्रोल्ड इट वेल. थैंक यू एस्ट्रोबॉट एंड अटानू भाई. शायद बुटला भाई भी थे, बट आई डिड नॉट सी हिम. तो हाँ, थैंक यू आकाश भाई अगेन. चलो मैन, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सी यू गाइस. थैंक यू चैट. So fucking great to see कि 1.3k लोग थे throughout. So that is really, I hope there are more next time. And make sure you like the stream and all guys. Take care. Thank you so much. Tata bye bye. Okay, आप सब members का नाम देख लो.